Now, the third question. In how many ways the letters of word Jupiter can be arranged in a row such that vowels appear in the alphabetical order? What are the vowels? A, I, E, O, right? Here the vowels are U, I, plan. So let's start with the first shortcut or the first concept, that is SATA, that is select and then arrange method. But before starting, just let's have some basics first. It will hardly take 2 minutes for us. Okay? So just quickly go through it. So the first word is combination and the another is permutation. In one word, just remember what is the combination means: to select only, whereas permutation means to select as well as arrange. So just remember this. So जब arrangement नहीं होगा तो automatically वो selection हो जाएगा. So this is denoted as NCR. This is denoted as NPR, right? So the formula for this is, everyone must be knowing, that is n factorial divided by n minus r factorial. For NCR, the formula is n factorial divided by n minus r factorial, here r factorial, right? Let's go do some calculation part of it. If I want to, let's say, NP2, you can do it by the formula, but just simple सा है, याद रखना, 10P2 मतलब 10 में से 2 बार इसको कम करके multiply कर दो, that's it. So 10P2 is nothing but 10 into 9, that is 90. If I say 12P3, what will be 12P3 in the same case? 12 को 3 बार कम करके multiply कर दो, 12 into 11 into 10. Right? Now, if I consider C, so 10C2, the first step will be same, that is 10 into 9. Second case, just divide it by 2 factorial, that is 2 into 1. So, though the answer of this is 45. If I say 12C3, 12C3 will be what in that case? 12 into 11 into 10 divided by 3 into 2 into 1, right? So this is a way of calculation, okay? Because I'll be using this, so you shouldn't get confused. One more thing, remember that selection is always equal to rejection, right? CAT is not a selection exam, it's a rejection exam. If I want to, let's say 100 may say C 98, if I want to select 98 people out of 100, selecting this many people is a tedious task. So better way, if I identify those 2 people to whom I want to reject, so it would be 100 C2. So just remember that selection is always equal to rejection. So if I say 500 C 497, it will be equal to 500 C3, right? But remember, this is only applicable for combination. This is not applicable for permutation, right? Never do this, that 100 P98 is equal to 100 P2. No. Okay, this will not work here. It is only applicable for the selection, right? Okay, having said this, the last concept is factorial, right? Everyone knows this, right? If I say, what is a 5 factorial? 5 factorial, you will say that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. But this is not the definition, right? Or this is the representation of a factorial. But what is the simple concept that, let's say there are the 5 students A, B, C, D, E, and there are 5 chairs. So now the first person A have how many choices? A has 5 chairs to sit. वो किसी एक चेयर पे बैठ गया. B के पास कितने choices है? B will have 4 choices. C will have 3 choices. D will have 2 and last will have 1 choice. So that is it, the factorial. So please remember the definition of factorial. If I say n factorial, what is n factorial? Is nothing but placing n people or n objects at n places, right? So that is what my definition of a factorial is. N factorial is the first person will have all the n options, then second will have 1 option less, third will have 2 option less, and so on and so forth. Last will have only 1 options. Alright, so this is what we call it as factorial. Also remember, and in terms of P and C is always equal to multiplication. ठीक है, जब भी and आया आपको multiply करना है, जब भी और आया आपको plus करना है. ठीक है, so these are the some basics which will require to go ahead. ठीक है, so having said this, let's go to the
questions now. I'll start with a very simple question, that is a CAT 2004 question, that among 10 students, how many rank lists are possible such that Ram is always above Sham? These are the two particular students in which Ram should always be above Sham. Now, I'll go with that SATA method only. What is the SATA method? It was select and then arrange, right? Basically nothing but the permutation का definition है ये, right? So among 10 students, first select, ये जो भी दो लोग हैं इनके लिए पहले हम दो जगह सिलेक्ट करते हैं. तो in how many ways that can be done? That can be done in 10C2 ways. What is 10C2? I have selected 2 places out of 10 places for these two particular students, Ram and Sham. Now, and means, as I said, and means into. Now let's try to arrange them. Let's say the two selected places are this. Let's say second place I selected, and let's say this fifth place I selected. Now when I try to arrange, because Ram हमेशा शाम के ऊपर चाहिए, तो second place surely will be occupied by Ram and fifth place will be occupied by Sham. Whatever place you select, not necessarily second or fifth, first, 10th, whichever you place you select, अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा. राम ऊपर वाली पोजीशन लेगा, शाम नीचे वाली पोजीशन लेगा. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस टू पीपल इज 1, राइट? सो अब ये दोनों का हो गया अरेंजमेंट. जो बचे 8 लोग हैं, 10 स्टूडेंट्स बिठाने थे ना, तो बचे 8 लोग, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो 8 स्टूडेंट्स एट 8 प्लेसेस, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज? एज वी सेड, नथिंग, दिस इज नथिंग बट द फैक्टोरियल. सो 8 लोग 8 जगह पे बैठ पाएंगे 8 फैक्टोरियल वेज से. So this is the answer of this question, right? I hope this point is clear. Let's go to the next question. Now second question. Here there are 5 people, PQRST. These are the 5 boys who are asked to come one at a time and make a presentation. In how many ways? P should come first, then Q and then R. So again condition is for PQR. So मैं पहले PQR के लिए जगह सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? सो 5 में से 3 जगह ये PQR के लिए सिलेक्ट करेंगे. दैट कैन बी डन बाय 5C3 वेज, राइट? एंड इनटू. नाउ लेट्स ट्राई टू अरेंज दिस PQR. कितने तरीके से अरेंज होगा? ओनली वन वे. जगह आप कोई भी सिलेक्ट कर लो. लेट्स से मैं लेता हूँ फर्स्ट, लेट्स से सेकंड एंड लेट्स से लास्ट. फर्स्ट पे कौन आएगा? P ही आएगा. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी देन Q, एंड देन लास्ट वाले पे R. So arrangement way for this PQR is only 1. Now the remaining 2 people, that is S and T, they don't have any objection. So these 2 people can be arranged in how many ways? 2 people, 2 places, 2 factorial ways. So this is the answer of this question. As it is asking in the value, let's solve it. 5C3 क्या होगा? 5 को 3 बार कम करके मल्टीप्लाई कर दो. 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2. So 3 2s and into 2. So this 2 gets 5 for the 20 should be answer of this question. Right? I hope this concept is clear. A very easy concept and very important one, right? I'm starting with the easy question. Gradually we'll take the difficult questions as well. फाइनली गाइज हमने MBA CET 2025 का जो इंटेंसिव रिवीजन वर्कशॉप है वो लॉन्च कर दिया है. ये 3 डेज का गाइज वर्कशॉप रहेगा जिसमें आपके इंटेंसिव पूरी जो रिवीजन है वो ली जाएगी एंड डेली 6 to 8 आवर्स के जो लाइव सेशंस है वो लिए जाएंगे एंड आपको MBA CET एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो सिखाई जाएगी. साथ ही में लास्ट ईयर के जो PYQs है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे जो है वो इसमें आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे ताकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में फिर से जो है वो रिपीट होते हैं तो वो आप इजीली जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर पाओगे. साथ ही में अगर आपने अभी तक कोई भी यहाँ पे वर्कशॉप या फिर कोई भी लेक्चर्स हमारे अटेंड नहीं किया है तो आप डेमो लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो. जिन्होंने शॉर्टकट वर्कशॉप में एनरोल किया था उन्हें भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है एंड जिन्होंने भी शॉर्टकट वर्कशॉप में जो है एनरोल जो है वो नहीं कर पाए ड्यू टू प्राइसिंग या फिर उन्हें बहुत लेट पता चला तो उनके लिए गाइज ये बेस्ट हो सकता है. इसमें 3 डेज में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सिखाई जाएगी. साथ ही में जो शॉर्टकट्स यहाँ पे सिखाया जाता है वो एक्चुअल आप एग्जामिनेशन में भी जो है वो अप्लाई कर पाओगे एंड PYQs तो जो है वो सारे जो है यहाँ पे लिए जाएंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट जो है वो हो सकता है. साथ ही में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर पाए इसके लिए गाइज हमने यहाँ पे जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे आपको 1200 रुपये जो है वो दिख रहा होगा बट जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे गाइज एंड चेकआउट करते समय यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा जो कि है KS लास्ट लैब. तो इसके ऊपर अप्लाई के बटन पे ऊपर जो है वो क्लिक कर देना तो आप इस सेम रिवीजन वर्कशॉप में बस 300 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे. 3 डेज़ का ये टोटल जो वर्कशॉप है वो रहेगा
जिसमें डेली 6 to 8 आवर्स के जो लाइव सेशन है वो होंगे एंड एकदम इंटेंसिव रिवीजन आपका गाइज इससे जो है वो हो जाएगा एंड इससे गाइज आप अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में और भी बेटर जो है वो स्कोर कर पाओगे। इसका कॉन्फिडेंस भी आपको जो है वो इससे आएगा। साथ ही में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी लेना है तो इसके साथ हमने 3 टेस्ट भी जो है वो डाली है, जिसमें आप पर डे एक टेस्ट जो है वो दे सकते हो, जो कि आपको बस 100 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप सोच सकते हो। बट ये जो वर्कशॉप है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे ज़रूर आपको एक जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गाइज आप इसमें जो है। The third question. In how many ways the letters of word Jupiter can be arranged in a row such that vowels appear in the alphabetical order? What are the vowels? A, I, E, O, right? Here the vowels are U, I and E, but I wanted that in the alphabetical order. That means E should come first, then this should come second and this should come third, right? So again, out of how many places did Jupiter have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So out of 7 places, first select 3 places for these 3 vowels. So that can be done by 7C3 ways. Now try to arrange them. Obviously it can be done by only one way. कोई भी आप जगह सिलेक्ट करो, लेट्स से मैंने सेकंड किया, थर्ड किया एंड लेट्स से सेकंड लास्ट किया। पहले पे पक्का है कि ई ही आएगा, फिर आई आएगा, फिर यू आएगा। आप जगह कोई भी सिलेक्ट करो बट ऑर्डर हमेशा वही होगा कि पहले पे ई, सेकंड पे आई एंड लास्ट पे यू। सो अरेंजमेंट का वे इज ओनली वन। नाउ हाउ मेनी these letters are remaining, the consonants are remaining. How many consonant? 4. So 4 consonant, 4 places. Answer should be what? 4 people, 4 places. It should be 4 factorial. So this should be the answer. Okay, as you can see, it's a very easy concept if you get a hold of it. Just try to solve this. 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2. 4 factorial is nothing but 24. So 3 to the 6, 6 gone. 35 into 24. So 35 into 2700 plus 140, that is 840 should be the answer. Right? I hope this point is clear. Answer is 840 for this particular question. Right? Okay, let's go to the next question. Question number 4. Again a simple question. Prasad has 5 children: Anna, Bartley, Champak, Dudlum, Ismail. In how many different ways that a sequence of their birth can be possible if Bartley and Champak are both elder than Anna? So condition तीनों पे है, तो पहले इन तीनों को ही देख लेते हैं। इन तीनों के लिए जगह सिलेक्ट कर लो। In how many ways that can be done? That can be done in 5C3 ways. Now let's try to arrange them. Let's say the 3 places are second, third and let's say last 5th. अब उससे कंडीशन क्या बोला है? बाटली एंड चंपक आर एल्डर देन अन्ना। सो ये तो पक्का है कि सबसे स्मॉलेस्ट है वो अन्ना है, तो अन्ना विल टेक द लास्ट प्लेस फॉर श्योर। बट बाटली एंड चंपक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट बाटली इज एल्डर देन चंपक और चंपक इज एल्डर देन बाटली, राइट? अन्ना तो पक्का लास्ट में ही रहेगा इन बोथ द केसेस। सो अरेंजमेंट वेज आर 2। डोंट रटाफाई कि हमेशा हमेशा अरेंजमेंट एक ही आएगा, राइट? ट्राई टू अरेंज, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि ये दिया था, यहाँ पे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल थी, राइट? सो नाउ वी हैव मेड देम सीटेड दिस 3 गाइज। बचे कौन है? 2 लोग बचे, डुडलूम और इस्माइल। उनको अरेंज करने का 2 लोग 2 जगह, इट इज 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 ओनली, 2 1 2। So this should be my final answer. So what is this? 5 into 4 into 3 by 3 into 2 into 2 into 2, right? एक 2 कट जाएगा, एक 3 कट जाएगा। 5 4 is 20, 20 into 2, 40 should be my answer. Right? So answer of this question is 40. So I hope you are getting this method. Believe me, it's a very easy and very helpful, right? So the next is question number 5. Now what is saying, how many 4-digit numbers can be formed such that A is greater than B is greater than C is greater than D? So these are the 4 digits. A is at the 1000 place, B is at the 100 place, C is at the 10th place and this D is at the unit place, right? So हमेशा ऐसा ही ऑर्डर चाहिए, ये सबसे बड़ा होना चाहिए, then ये and ये. So again students will try to make the cases 0 पहले पे आएगा या नहीं आएगा उसके केसेस में, बट बिलीव मी एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिंपल, राइट? हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है? वी हैव 0, वी हैव 1, वी हैव 2 टिल 9, 10 डिजिट्स अवेलेबल है।
बट हमको कितने डिजिट्स चाहिए, हमको सिर्फ 4 डिजिट का नंबर चाहिए और हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 10. सो द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट दोज 4 डिजिट जो यहाँ पे बैठेंगे. सो आउट ऑफ 10 सेलेक्ट 4 डिजिट्स, राइट. नाउ ट्राई टू अरेंज देम. लेट्स से 0 का केस लेता हूं मैं. लेट्स से 0 सेलेक्ट किया, लेट्स से 6 सेलेक्ट किया, लेट्स से 3 सेलेक्ट किया, लेट्स से 8 सेलेक्ट किया. दिस जस्ट एन अजम्पशन, आई एम जस्ट अज्यूमिंग एनी 4 डिजिट्स, यू कैन टेक एनीथिंग. आप इनको भी अरेंज करने की कोशिश करो. सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, दैट इज 8. सो बाय डिफॉल्ट 8 यहां आ जाएगा. बाय डिफॉल्ट 6 सेकंड प्लेस पे आएगा, ये 3 होगा और 0 विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ बाय दिस मेथड, राइट. सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड. तो अरेंज करने का एक ही तरीका है कि बड़ा सबसे पहले ए आएगा, फिर सेकंड बिगेस्ट, देन सी एंड देन डी. तो वेदर यू टेक 0 और वेदर यू टेक डोंट टेक 0, इट डजंट मैटर. जो भी सबसे छोटा होगा लास्ट पे आएगा एंड लास्ट पे 0 आने से हमारी कोई कंडीशन चेंज नहीं होती है, फर्स्ट पे होती है, राइट. कि अगर पहले पे मेरा 0 आ जाए कि 0 है, बट पहले पे आ ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, दिस कंडीशन, राइट. सो 0 विल बी टेकन केयर ऑफ. सो अरेंजमेंट का वे इज ओनली 1. So answer of this question is 10C4, right. So I hope you get this point. Seemingly difficult question, but अगर आपको फंडा क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है. Let's go to the next question. Question number 6. ये उसे टाइप का, I think this is a Z question. I don't remember the year. Similar 4 डिजिट का नंबर बनाना है. Here 1000 digit, that means this is 100 digit, this is 10th digit, this is unit digit. So what is the condition? 1000 digits should be greater than 10th digit, which in turn should be greater than unit digit. So there is no condition for the 100 digit. ठीक है, please keep that in mind. And again the digits available to us are 0, 1, 2 and so on till 9. So let's try to first जिन पे condition है उनके करते हैं. तो condition 3 जगह पे है. So मैं पहले इन्हीं के लिए digits select करता हूँ. How many digits I have? 1 to 0 to 9. The 10 digits, 10 में से मुझे 3 यहाँ चाहिए. So that can be arranged in 10C3. Sorry, that can be selected in. So 10C3. कोई भी 3 digits होने दो. Let's say मैं फिर से 0 लेता हूँ, 6 and 8. अब इसको अरेंज करो. एक ही तरीका अरेंज करने का. 1000 पे 8 बैठेगा, 10 पे 6 आएगा, यूनिट पे 0 आएगा, राइट. सो यहाँ अरेंज करने को तो एक ही वे. सो आई हैव placed 1000, I have placed tens, I have placed units. Now the remaining is 100. अब 100 डिजिट पे मुझे कौन कौन आ सकता है? 100 डिजिट पे मेरा 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, till 9. All digits can come, right? So at 100 place, how many digits can come? At 100 place, all from 0 to 9, any digit can come because it will not violate the basic condition which it question has given. So there are 10 ways in which my 100 digits can be filled. So answer should be 10C3 into 1 into 10. So let's try to solve this. So 10C3 is 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 10. So this is 3 3s are 9, 2 4s are 8, 4 3s are 12 into 100. So answer of this question should be 1200, right? Yeah. So question number 7. Yeah. अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, राइट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. यू कैन सी यहाँ पे क्या था, इनइक्वालिटी a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d. वेयर एज इन 7 व्हाट इज द इनइक्वालिटी? a लेस देन b लेस देन c लेस देन d. So it is a reverse inequality. So what difference it will make? Just see. So which place is the smallest here? I can see A is my smallest. तो मैं अरेंजमेंट में कुछ भी करूंगा, स्मॉलेस्ट यहाँ पे आके बैठ जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट बैठ जाएगा, राइट. नाउ थिंक, अगर मैं 100 सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी 0 सेलेक्ट करता हूँ, तो चार डिजिट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 10, तो 10C4, राइट. सपोज इफ आई सेलेक्ट 0, 0, 3, 8 एंड 6. नाउ ट्राई टू अरेंज दिस. सबसे बड़ा जो है 8, वो तो यहाँ पे आएगा, फिर 6 यहाँ पे आएगा, फिर 3 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आएगा. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया?
0368 is not a 4-digit number. He is clearly asking us a 4-digit number. 0368 is a 3-digit number. So what learning we get here is, कुछ भी आप कर लो, जीरो आप सिलेक्शन के रेंज में नहीं रख सकते, बिकॉज जैसे ही आपने जीरो को सिलेक्शन टीम में रखा और जीरो सेलेक्ट हुआ, सो इट हैव नो प्लेस टू सिट बट एट द फर्स्ट प्लेस. और जैसे ही वो फर्स्ट प्लेस पे बैठ गया, इट विल नॉट बी अ 4-digit नंबर, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू अ 3-digit number. So in my selection I should not keep 0, because 0 आ ही नहीं सकता, right? So apart from 0 every digit can be selected, so I am scrapping 0. So how many digits are there? 1 से लेके 9 तक there are 9 digits. Select any 4 digits out of it. Arrangement का तरीका एक ही होगा, कोई भी वो digits हो सारे वो एक ही तरीके से arrange होंगे, right? So answer of this question is 9C4. You remember the answer of this question was, question number 5 was 10C4, because there 0 was involved, no issues about it. But in this question, question number 7, you cannot take 0. So guys, here it is. ऐसे ही learning होती है. आप एक concept उठाते हो, right? और उसको जगह जगह उसके questions apply करके देखो. जिस दिन आपको questions ऐसे solve होने लगे using a method, believe me, you are on the right track, right? Let's take another question. CAT 2015 क्वेश्चन, राइट? सिंपल वही क्वेश्चन है, तो जस्ट डिजिट की जगह P1 P2 दे दिया, हार्डली 10 सेकेंड क्वेश्चन. देर आर 12 numbers, वॉट एवर दे आर, P1 P2 एंड दिस इज द ऑर्डर, P1 ग्रेटर है, P3 P so on so forth. मुझे उठाने 3 numbers जिनको मैं नाम देता हूँ A B C, and A should be greater than B should be greater than C. So what I'll do, I'll select 3 numbers out of this 12, so that is 12 C3. अब वो कोई भी नंबर्स हो दो, लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया P3, लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया P1, लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया P8. अरेंजमेंट का एक ही पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ा वाला P8 है वो यहाँ पे आएगा, राइट? फिर P3 यहाँ पे आएगा और P1 यहाँ पे आएगा. अरेंजमेंट देयर इज ओनली वन वे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 12C3 into 1 as it is given in the numbers. Let's solve this. What is 12C3? 12 को 3 बार कम कर दो, 3 into 2. So 6 2s are 22 into 10, 220 should be the answer. That is the fourth option, right? So guys, I hope you like the concept of select and arrange. Believe me, it's very easy. Just try to apply this. कोई भी doubt हो, you can ask in the comment section. We'll surely reply. Thank you.